नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस ग्रोथ का फंडा में आज हम फोकस करेंगे टेक्सटाइल क्षेत्र पर। कारोबार के लिहाज से यह भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे पुरानी इंडस्ट्रीज में से एक है। अब जब बिजनेस के डायनेमिक्स तेजी से बदल रहे हैं तो ऐसे में हम इस क्षेत्र में हो रही हलचल का जायजा लेंगे। साथ ही अनिश्चित माहौल में एमएसएमई कैसे अपना कदम बढ़ाएं, इस पर भी मंथन करेंगे। टेक्सटाइल क्षेत्र के दो प्रमुख सेंटर्स तिरुपुर और लुधियाना से हमें इंडस्ट्री लीडर्स ज्वाइन कर रहे हैं। तिरुपुर से हमारे साथ मौजूद हैं राजा एन शनमुगम, प्रेसिडेंट तिरुपुर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, और लुधियाना से हमारे साथ मौजूद हैं अजीत लाकड़ा, प्रेसिडेंट लुधियाना निटर्स एसोसिएशन। आप दोनों का ही शुक्रिया कार्यक्रम में ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। लाकड़ा जी, आप पहले हमें बताएं, क्या टेक्सटाइल क्षेत्र में डिमांड के मोर्चे पर स्लो डाउन देखा जा रहा है, जहां तक टॉप एक्सपोर्ट मार्केट्स यूएस और यूरोप की बात है? ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि इस वक्त टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में भी, इवन डोमेस्टिक मार्केट में भी, एक्सपोर्ट में यूएस एंड यूरोप इज लॉट ऑफ स्टैगफ्लेशन, देयर इज ए स्लो डाउन और उतनी डिमांड नहीं है जितनी होनी चाहिए। यूएस एंड यूरोप में रिटेल में स्लो डाउन है। जब रिटेल नहीं चलती तो नेचुरली जो इंपोर्टर्स हैं वहाँ पे वो माल नहीं मंगवाते। लास्ट ईयर FY22 में देयर वाज ए रिकॉर्ड एक्सपोर्ट टारगेट हमारा जो 44 बिलियन के करीब था। तो इस बार ग्रोथ होनी चाहिए थी, लेकिन ग्रोथ नहीं होगी जो नज़र आ रहा है। अगर हम FY22 का टारगेट भी अचीव कर लेंगे तो ये बहुत, समझो, एक बड़ी एक टारगेट वाली बात होगी। Mr. Shanmugam, India recorded its highest ever textiles and apparel exports in FY22. As Mr. Lakra mentioned, how is the road ahead looking like in FY23 in this uncertain environment, sir? Rightly said by Lakra ji, that this beginning of this year itself, we are facing a recession-like situation all across the globe, and particularly in Europe and US. The last 3 months, we couldn't see a surge in booking because of the recession, what is going around in Europe as well as in US. And coming this month, normally from Tirupur perspective, the month of July and August is a sluggish period always. And we anticipate that by September, the recovery should happen because in Europe region, the Ukraine-Russia war has to come to an end. Thereby, the rejuvenation do happen in the European territory. Of course, in US, definitely we hope that the government will take necessary steps to control the recession. So if both things happens, definitely we can cope up with the situation and we can attain this. We can try to attain this 44.4 billion in this financial year. Mr. Shanmugam, what is the latest on the shipping container front, as this has been a big concern area? Yes, since COVID 2020 onwards, we face this problem globally, and particularly for the exporting community, this has become a bane, hurting the industry very, very badly. And because the surge of container price has got registered five-fold, six-fold like that. So now it is slowing down, the price is flattening, but not to the pre-COVID level. Container shortage is still lingering all across because a sort of cartelization has been formulated by the liners, and that way less number of ships are being plied between the destinations. So this has to be controlled by collective efforts of all the major countries, trading countries involved, and thereby only we have to bring the liners onto the table and we have to resolve this. Otherwise, they are making, they're fleecing out money by operating less number of vessels between the destination. I wish that Government of India and collectively with other major trading countries' government, this has to be resolved at the earliest. लाकड़ा साहब, भारत कॉटन का सबसे बड़े प्रोड्यूसर में है दुनिया में, लेकिन कॉटन की कीमतों में काफी तेजी रही है। इसका एमएसएमईज पर खासा असर भी देखा गया है। अब भारी दबाव के बाद क्या कुछ रिलीफ देखा जा रहा है? क्या असेसमेंट है सर आपका? Till end of the last year, yarn prices went up, to very high levels. तो एमएसएमई में उन दिनों लोगों ने बहुत लॉस खाया है, क्योंकि वो बियॉन्ड
उनकी टॉलरेंस के प्राइस चली गई, तो बायर्स ने भी, उन्होंने भी लूज किया, मैन्युफैक्चरर्स ने भी लूज किया। लेकिन अब डेफिनेटली जो यार्न प्राइसेस हैं अप टू मार्च लेवल तक तो आ गई हैं, दे हैव कम डाउन, and if they are coming down, it is not that it has come to the earlier levels, but because of slowdown definitely it has come down। लेकिन जो कॉटन है, आपने कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री बोला इंडिया है, but still the cotton prices are up from the March level by almost 10%। तो हम ये महसूस करते हैं कि यार्न अबाउट 5% एंड कॉटन अनदर 10% नीचे आना चाहिए, तभी ये वायबिलिटी जो है इंडस्ट्री के लिए बनेगी, अदरवाइज ये अभी भी प्रॉब्लम है। It's rightly quoted by Lakraji, and this was an unprecedented price hike never seen by the industry so far in history. And this is artificial price hike which has been witnessed right now. The free fall is happening on the cotton front, but yet to be translated to the yarn section. What we expect is that the price correction has to happen still further, and then only we can catch up to the international market. Otherwise, we would be missing the China plus one factor, which is already on card. लाकरा साहब, अगर हम ओवरऑल पिक्चर की बात करें, इंडिया काफी स्टिफ कंपटीशन फेस कर रहा है बांग्लादेश और वियतनाम से, आप क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली कंपटीशन है, बट स्टिल आई वुड से इंडिया इज ए मच बिगर कंट्री। हमारे पास कॉटन है, हमारे पास चीप लेबर है, और हमारे एफटीएज भी काफ़ी कंट्री से हो गए हैं, और जो प्लस चाइना पॉलिसी है जो उनकी जो धीरे धीरे गारमेंट को छोड़ रहे हैं, तो उसको कैचअप करने के लिए इंडिया स्टैंड्स ए बिग अपॉर्चुनिटी। तो लेकिन इसके लिए मैं ये कहूँगा कि इंडिया में कैपेसिटी बिल्डिंग की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर ऑर्डर्स बहुत बिग आते हैं तो क्या हम उनको कैच कर सकते हैं, क्या हम उनको टाइमली डिलीवरी दे सकते हैं, क्या हम सही क्वालिटी दे सकते हैं? बट दिस इज द टाइम दैट वी मस्ट अपग्रेड अवरसेल्व्स। अपग्रेडेशन मीन इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, टेक्नोलॉजी एंड कैपेसिटी। कैपेसिटीज नहीं होंगी तो हम अपॉर्चुनिटी भी लूज कर जाएंगे। बांग्लादेश या वियतनाम चाहे जितना मर्जी काम कर लें, लेकिन फिर भी अगर हमारी कैपेसिटी अच्छी होगी वो हमें मैच नहीं कर पाएंगे, आई एम श्योर। तो जो एफटीएस हुए हैं, दे आर गोइंग टू हेल्प अस। Mr. Shanmugam, in the midst of China plus one strategy, what is the response you're getting at the ground? What type of inquiries are you receiving from foreign buyers? And are we actually ready to tap newer opportunities? So right now, India has a bright opportunity because India is blessed with enough cotton as well as enough workforce as well as enough man-made fibers. So these three are the major ingredients required to run this industry, which are abundantly available. And in this situation, we have to make use of this opportunity. This China plus one strategy is very well on card because right now all the brands across the globe are wishing to replace China slowly because they couldn't easily locate matching supplier from other countries like India-like countries. So they work out in a slow pace to create a substitute for Chinese factories. So this is the fact. So on this background, we started getting inquiries on lot many fronts because the same brands who are dealing with India as well as with China, now they are interested to shift certain portion of their orders towards India. लाकरा जी, आपकी कैसी उम्मीदें हैं मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क स्कीम मित्रा से? इसके तहत वर्ल्ड क्लास इंफ्रा पर जोर होगा, साथ ही प्लग एंड प्ले फैसिलिटी भी होगी। लेकिन अभी जो जैसे 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बन रहे हैं इंडिया में, जो एक लुधियाना को भी अलॉट हुआ है, वो जो है जिसमें मल्टीपल फैसिलिटीज हों, कॉमन फैसिलिटीज होंगी, तो एमएसएमई उसमें बहुत गेन करेगा। भी कॉमन डाइंग प्लांट हैं, कॉमन एम्ब्रॉयडरी के सेक्शन हो, प्रिंटिंग के सेक्शन हो, कटिंग रूम बड़े बने हो, ताकि एमएसएमई कट एंड सू करके इमीडिएटली अपना माल पैक करके एक्सपोर्ट कर सकें। मेगा
टेक्सटाइल पार्क बनेंगे तो उसमें जितने भी यूनिट लगे दे शुड ऑल बी एलिजिबल फॉर पीएलआई। तो उसमें जल्दी अपग्रेडेशन होगी और लोगों को फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी। तो जिस तरह पहले AU TUF चल रहा है, उसका भी अभी गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी डिक्लेयर की है ये कंटिन्यू रहेगा। तो ये रहना चाहिए और इसलिए MSME के लिए फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट। पॉलिसीज गवर्नमेंट इम्प्रूव कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो एक इंटरेस्ट रेट का फैक्टर है जो थोड़ा MSME को डिस्टर्ब कर रहा है कि हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन की वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं। तो जो इंटरेस्ट रेट है वो MSME को हर्ट करता है। तो कोई ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए कि इंडस्ट्री के लिए इंटरेस्ट रेट को स्टेबलाइज किया जाए। फिलहाल वक्त ब्रेक का है। आप देख रहे हैं SME एक्सप्रेस ग्रोथ का फंडा। हम जल्द ही लौटते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं SME एक्सप्रेस ग्रोथ का फंडा। आज हम फोकस कर रहे हैं टेक्सटाइल क्षेत्र पर। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मिस्टर Shanmugam, the government is planning to come up with one more production-linked incentive scheme (PLI) for the textile sector. In Tirupur, there are huge number of MSMEs. What feedback are you getting? So it's a good step taken by Government of India by announcing PLI scheme. But actually, it has been visualized for the large players to take part in the first PLI scheme, which has got announced. And Tripur-like cluster is made up of MSMEs in 100%. So MSMEs requires this PLI scheme support, which need to be hand-holding factor for them to scale up the production base from the present level. So we expressed our wish that the second PLI should accommodate not only man-made fiber component, but also the cotton component, because the cotton is a predominant product made out of India, and we are blessed with cotton growing areas of such much. And we have to make use of this plan, the PLI scheme like plan, to grow the industry. Mr. Shanmugam, how are you analyzing developments regarding FTAs? India is moving ahead very strategically on this front. We have to take cue out of this global competition where tiny nations like Bangladesh, Vietnam, Cambodia-like countries have overtaken India by many strides. So though India is blessed with all positive factors as cotton enriched condition, as well as the man-made fiber availability, as well as the young workforce availability, in all these factors, we are in an advantageous position, but we have got relegated to the 6th position in the global race because of very many factors, and one among that is FTAs. Because all these tiny countries who have overtaken us do have either underdeveloped country tag or FTAs with the major markets like European Union. So what we wish is that government need to speed up. Already they are on the process, but they have to speed up and fetch as quick as possible the FTAs with the UK, as well as FTAs with the EU, and also the FTA with Canada, which are all on the negotiation front right now. So once it has been done, definitely we will have a level playing field across the globe. There we are using our potentiality, we can easily outwit the competitors because of our strength. So the government has to take a serious step towards this to grow this industry through this FTA front. लाकरा साहब, टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पोटेंशियल को आप कैसे देख रहे हैं और आपकी क्या एडवाइस होगी MSMEs के लिए? टेक्निकल टेक्सटाइल में तो बहुत बड़ा स्कोप है। तो इंडिया में अभी टेक्निकल टेक्सटाइल का लेवल बहुत नीचे है और इसमें इतना बड़ा स्कोप है कि जितना भी हम उसको कैच कर सकें दैट विल बी गुड। अब मेरे हिसाब से इसमें पॉलिसी में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई हैं। गवर्नमेंट ने अच्छी पॉलिसीज़ बनाई है टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए, लेकिन टेक्निकल टेक्सटाइल में सिर्फ MSME के लोग डरते रहते हैं कि शायद ये बड़ा मुश्किल काम है, हमें एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
तो मैं तो MSME को एडवाइस करूंगा कि दे शुड सिलेक्ट आइटम्स, क्योंकि टेक्निकल टेक्सटाइल में देयर आर वैरायटी ऑफ आइटम्स, और उसकी डोमेस्टिक की डिमांड भी अच्छी है और एक्सपोर्ट में भी बहुत स्कोप है। तो टेक्निकल टेक्सटाइल में MSME को एंटर करना चाहिए और उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग करके अच्छी क्वालिटी में एक्सपोर्ट का पोटेंशियल इज वेरी वेरी बिग। Mr. Shanmugam, how is the textile industry getting ready for Industry 4.0 with regard to skilling of workforce? Sir, this is a very pertinent question. This industry is ever set to grow because as far as the mankind is concerned, next to food is clothing. So this industry is ever set to grow only. And in this situation, we have to equip ourselves to optimize our efficiency level in comparison with the global players, for which we have to undertake the upskilling exercise on the skill inventories. Then only we can easily catch up to the global order, and as well as we can excel with our competitors. For which what I suggest continuously with the relevant ministries and departments, that upskilling on the skill inventories of chosen skill inventories is very much required effort, which has to be taken as a one-time intervention by the government side. So that will enhance the skill set of the people who got deployed, and it would help to grow the business in the international level, and that way it will fetch more orders, and that way the speed of growth of this industry would be much appreciable. To attain this 4.0 requirements, we need to do this all this grassroots level exercise to equip ourselves to perform well in the global competition. Mr. Shanmugam, 100% FDI has been allowed in the sector under the automatic route. How do you see the impact on the overall development of the textile sector? This is a welcomable step taken by our government by allowing 100% FDI onto this industry, because this industry requires the FDI route to get established the machinery manufacturers base over here, because China has got facilitated this long back, and they got established all the manufacturing, machinery manufacturing activities over their territories. Because across the global brands, all have manufacturing base in China. So likewise, India has to open up, and it has to allow the FDI route to make all these facilities happening over here. So then automatically it will help to procure our required machines locally without spending our foreign exchange, which is dearer to our kitty. So thereby, this kind of step is going to be a very fruitful one in the long run. And now final comments. Mr. Shanmugam, over the years, Tirupur has grown majorly, and the government of India wants to create textile hubs like Tirupur. Your views, please. Out of 422 billion total trade happened in the last financial year, Tirupur has clocked 1.07% out of it through one product. So this is the greatest achievement one cluster can attain in its lifetime that has been done. And I visualize that India is having 750 districts across the nation. So if each district could be able to harbor one Tirupur-like cluster on a related product of their choice, definitely attaining 3 trillion foreign trade alone is easily possible by our country. और इंडस्ट्री ऐसी हो ऐसी जगह पे जहां आप फॉरेस्ट को या प्लांटेशन को ज्यादा डिस्टर्ब ना करें. इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट कि हमें इंडस्ट्री के लिए कौन सी जगह एलोकेट करनी है जिससे वाटर एंड एयर पोल्यूशन जो है वो खराब ना हो, और जो चीज हो रही है उसको हमें कट डाउन कैसे करना है, ये बहुत जरूरी है. अभी के लिए बस इतना ही. टेक्सटाइल क्षेत्र में एमएसएमईज के सामने मौजूदा चुनौतियों और ग्रोथ के नए अवसरों से जुड़े तमाम पहलुओं पर हमने मंथन किया. तिरुपुर से राजा शनमुगम और लुधियाना से अजीत लाकरा जी, आपका शुक्रिया. अगले एडिशन में
हम एक नई थीम के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। फिलहाल नमस्कार।